The power of self-disclosure. So when we say self-disclosure, self is myself, यानी मेरे बारे में. जब आपके बारे में बात हो रही है तो आपके बारे में. Disclosure मतलब sharing openly about myself. I'm disclosing myself. So this can be one principle. जहाँ पे आप अपने stories में अपनी लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज सुना के अपने लोगों को मोटिवेट कर सकते हो. ठीक है, दिस कैन बी वन आइडिया. सी, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. कोई एक पर्सन आपके पास आता है और वो प्रॉब्लम में है. ठीक है, ही इज हंग्री एंड नाउ यू ट्राई टू फिश फॉर दैट हंग्री मैन. So what will happen? Second time when that person will again feel hungry, he will come to you. Then again you will fish for him, for the hungry man. But instead of that, what you can do, you can teach him to fish for himself. So that can be a permanent solution. Later, he can also teach others how to fish. So अपने बारे में आप बता के लोगों को एक मैसेज कन्वे कर सकते हो. But remember, this is a process. You have to learn about the self-disclosure in the storytelling. Use this idea. People can get motivated by this. You can always share your experiences.